Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about economic importance of fungi. Fungi play an important role in agriculture and environment as well as the decomposition of various types of the organic matter. Decomposition and humus formation. Fungi decompose the dead animals and convert into humus. Humus provides important nutrients to plants, also increases the water holding capacity of the soils. जब जानवर डेड हो जाते हैं, जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, जो जमीन के हिस्से के बनने के अमल को या वो जो मटेरियल बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं. और ये ह्यूमस बेसिकली दिस इज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग प्लांट्स. बायोलॉजिकल सक्सेशन. सक्सेशन क्या चीज है कि सोइल के ऊपर जो कंडीशंस डेवलप होती हैं, शुरू में सोइल के ऊपर क्या थे और उसके बाद क्या थे, कुछ अरसे के बाद वो कुछ सालों के बाद कौन से प्लांट जो है ना डेवलप हुए. और ये एक ग्रेजुअल जिसे कहते हैं कि टाइम स्केल है कि प्लांट्स जो है वक्त के साथ साथ किस तरह से एरिड एनवायरनमेंट से प्लांटेशन की तरफ या ग्रीनरी की तरफ किस तरह से वो सोइल जो है ना वो डेवलप हुई. एज लाइकन्स फंजाई प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सेक्शन. Biological nitrogen fixation. Lichens and some fungi are also involved biological nitrogen fixation. Mycorrhizae. Mycorrhiza is an association between the fungi and roots of higher plants. Fungi absorb water and minerals and transport them to plants. Thus, plants can survive in arid environments. इन सारी इम्पोर्टेंस के अलावा फंजाई मशरूम की शक्ल में ग्रो भी की जाती है और फूड के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिसको कमर्शियली ग्रो करवाया जाता है. Edible fungi are commercially cultivated in many countries, such as the morels and truffles are very delicious. There is great demand of these fungi in the market. Source of the plant hormones. Some fungi also source of the plant hormones. Plant hormones, for example, the gibberellins are obtained from the species Gibberella. Commercial importance of the fungi, which is used in the baking and brewing industry for the preparation of the cheese. So penicillium is used for the giving liquor aroma caustic color to some the cheese. उसके बाद सोया प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होती है, स्पोर्जिलस यूज होती है. सेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए भी, फॉर एग्जांपल एस्परजिलस स्पीशीज को यूमेरिक एसिड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद विटामिन्स और कोएंजाइम्स और एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए भी स्कैरोमेसस सर्विसियाई व्हिच इज आल्सो नोन एज द यीस्ट, उसको विटामिन बी और विटामिन डी राइबोफ्लेविन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फंजाई को एंटीबायोटिक्स और दूसरी ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए भी कल्टीवेट किया जाता है. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से हासिल की जाती है. लोवेस्टेटिन जो कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये भी फंजाई से हासिल की जाती है. साइक्लोस्पोरिन प्रिवेंट organ like the kidney rejection. Ergotin relieve the headache by migraine. Graciofulvin inhibit the fungal growth. These are all types of the antibiotics that are generally obtained from such type of the fungi, microscopic fungi basically. The natural dyes are also obtained from special type of the lichens, which is used in the textile industry. जहाँ फंजाई की इम्पोर्टेंस है पॉजिटिवली, वहाँ पे इसकी नेगेटिव इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ द इट causes the rotting, causes the human diseases as well as in the plants and animals. Fungi involved in the wood rotting. Fungi also cause diseases, very serious diseases in plants, rust, moss, powdery mildews, ergot rot, tato wilt, cotton rot, apple scab. यानी कि प्लांट्स के अंदर मोर देन 80% जो डिजीजेस हैं वो फंजाई की डिजीजेस होती हैं, मैक्रोस्कोपिक फंजाई की डिजीजेस होती हैं, जिनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम होता है. उसके बाद ह्यूमन के अंदर ये डिजीजेस काज करती हैं. फॉर एग्जांपल रिंगवर्म, जिसको आम तौर पे हम ततरी कहते हैं, जो बॉडी स्किन के ऊपर एक रिंग की शक्ल में फैलती चली जाती है. तो शुरू में थोड़ी सी होती है, बाद में ये इस तरह से बाहर की जानब इनके माइसीलियम जो है डेवलप होते जाते हैं और उसमें रेशा बनता चला जाता है. एथलीट फुट कैनाडाइटिस,
उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस, स्पॉन्जिलाइसिस एंड प्रोटिज्म, these are all types of the human diseases caused by the fungi. Zygomycota, this is the group of the fungi. In this group, we will study the type of the fungi, which is known as the rhizopus as the mucor. जनरली हम इस ज़ाइगोमाइकोटा के मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी टाइप्स पाई जाती हैं और इसका थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है। तो आमतौर पे ये जो इसमें जो फंजाई है वो रहिजोपस है और म्यूकर भी शामिल है। दिस इज प्रोपेगेट ऑन सबस्टेंस ऑफ द ब्रेड्स, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। आमतौर पे रोटियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स या ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स नज़र आती हैं बेसिकली, जब वो सब्जियां कुछ दिन पड़ी रहें या रोटी पड़ी रहे तो उसमें ये इस किस्म की स्ट्रक्चर नज़र आ जाती है, बेसिकली वो फंजाई होती है। Most species are the scraps living of the decaying organic material. A few are the parasites, particularly of insects. इसका थैल्स जो है वो सिनोसिटिक होता है, in which nuclei are haploid when the organism is in the vegetative stage. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप खुद इसको पढ़ लेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हम पहले जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ चुकी हैं कि इसमें मुख्तलिफ इसके जो पार्ट्स हैं वो टूटते फूटते हैं और नए माइसीलियम को डेवलप करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी दो किस्म के इसमें स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होती हैं, प्लस और माइनस दोनों जब मिलती हैं तो ज़ाइगोट बनता है, तो नई जो है ना माइसीलियम को जर्मिनेट करता है। इसकी पहली टाइप है म्यूकर। म्यूकर को हम स्टडी करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, ये इसकी सारी क्लासिफिकेशन है। आमतौर पे जो म्यूकर है ये सेप्रोफिटिक फंगस के तौर पर ग्रो करती है ऑन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। इट इज कॉमनली फाउंड इन द सॉइल, प्लांट सर्फेसेस एंड रॉटन वेजिटेबल matter. It forms a black spore, therefore it is known as the black molds. Black molds भी इसको कहा जाता है। Colonies of this fungus are typically white or gray. The thallus of the mucor is composed of the aseptate mycelium, syncytic hyphae. Hyphae are the branched and interwoven. These are the hyphae which are penetrated into the substratum and absorb the nutrients from the such type of the material and produces the sporangium and spores, and then spores germinate to produce the new mycelium. It also has glycogen and oil drops. Rhizoidal hyphae secrete hydrolytic enzymes for the decomposition of the ऑर्गेनिक मैटर, और ये एफी जिस मटेरियल के अंदर जज़ब करती हैं उस मटेरियल को ये तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती हैं, और इनके बेसिकली रूट्स नहीं होती लेकिन रूट्स की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाता है, और ये स्टोलन के जरिए एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ी होती हैं। ऐसे ये स्टोलन है, ये स्टोलन सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर इसके थैलोस को देखा जाए, दिस फंगस इज ग्रोन ऑन द ब्रेड एंड दिस इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन containing the oil bodies, nucleus, vacuole, cytoplasm and the cell wall. तो रिप्रोडक्शन इसमें जो म्यूकर के अंदर होती है वो सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। हैफी टूटती फूटती हैं तो नई हैफी को या नई माइसीलियम को जन्म देती हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है प्लेनोस्पोर्स के जरिए होती है। प्लेनोस्पोर्स क्या होती हैं? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस they germinate to produce the mycelium. This is known as the sporangiophore. The terminal end of the sporangiophore swells to develop the sporangia. तो sporangiophore जो होती हैं ये this is a terminal end. This is sporangiophore basically. This produces the sporangia and sporangia produces the spores. Then spores mature, disperse here and there into the air current or stagnant water or some other type of the solid objects. They under the favorable conditions they germinate to produce the new mycelium or the fungus. A swollen vegetative sterile columella develops in the center of the protoplasm. Protoplasm divided into small components, each contain 2 to 10 nuclei in it. They are called the aplanospore. At maturity, spore wall of the sporangium bursts and spores are dispersed by wind.
Each spore germinates through a germ tube under favorable conditions. This tube develops into new mycelium. उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर्स और ओइडिया। क्लेमाइडोस्पोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब माइसीलियम जो है हैफी वो किसी जगह स्वेल हो जाए और वो थिक स्ट्रक्चर बना दे, उसको ईडिया कहती हैं या क्लेमाइडोस्पोर्स कहती हैं। और जो ईडिया की स्ट्रक्चर डिवेल्प होती है बडिंग के नतीजे में, उसको हम टोरूलास कंडीशन भी कहते हैं। इस किस्म की टर्मिनोलॉजी जो है वो एमसीक्यूज में आ सकती है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें दो तरह की एफी प्रोड्यूस होती हैं, प्लस और माइनस। उनको प्लस और माइनस स्ट्रेन कहा जाता है। प्लस और माइनस स्ट्रेन जब दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं तो उसमें जाइगोट डेवलप होता है, और जाइगोट जो है प्रोगमिटेंजिया प्रोड्यूस करता है। और प्रोगमिटेंजिया जो है देन सस्पेंसर सेल्स की ज्वाइनिंग से जो है ना वो जाइगोट प्रोड्यूस करता है, और वो जाइगोट जर्मिनेट करके नए जाइगोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। जाइगोस्पोर जो है फर्दर स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के बाद दो किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि पॉजिटिव होती प्लस और माइनस होते हैं। देन फिर प्लस और माइनस हैवी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि आगे उसका जो लाइफ साइकिल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं और जर्मिनेट करती हैं। इकोनॉमिक और मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द म्यूकर। चूंकि इसके जो स्पोर्स हैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ना नजर आने वाले होते हैं, और ये आमतौर पे एलर्जी काज करती हैं। अगर स्किन के ऊपर लग जाएं तो स्किन में इरिटेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। This is the sexual reproduction of the mucor. In this diagram, you can see that the plus and minus, these are both two types of the mycelia are present. When the suspensors of the both mycelia come close to each other, plus and minus, and come close to each other, fuses each other, produces the progometangium. Then progometangium between the wall of both the suspensor dissolved with the hydrolytic enzymes, and when wall dissolves, it forms a zygote. After the fusion, it forms the gametangium. When the gametangium is produced, further develop into the zygote. And you know that what is the zygote? The zygote is the structure where the zygospores are produced. In this, the zoosporangium is produced. Zoosporangium produces the spores. The spores are of two types, plus and minus. The plus and minus spores further develop, germinate to mycelia, and produces the new mycelium, and each mycelium of different strains further develop into the in this way the sexual reproduction takes place of the mucor. Then the penicillium. This is the classification of the penicillium. It belongs to the division Ascomycota, Nicholas, Plectomycetes, and the genus Penicillium. It is well-known fungus for its importance and the antibiotic for the production of the penicillin and food industry in cheese and meat production. The name penicillin is derived from the Latin word penicillius, means brush, which refers to a stalk bearing radiating chains of the conidia resembling a broom. इसको ब्रूम भी कहते हैं, यानी कि ब्रश की तरह की इसकी ये चेन्स होती हैं स्टिग्मेटा की, तो इसलिए इसको ब्रूम्स का नाम भी दिया जाता है। दिस इज द थैलस of the penicillium or conidiophore Fe of the penicillium. You can see that this is the conidiophore. Then the next bifurcation is known as the medulla. This is the medulla, this is the medulla. Both when combined, the plural is known as the medullae. Then medulla further divide produces the stigmata. Then stigmata produces the chains of the conidia. आमतौर पे ये conidia जो होती हैं ये नेकड होती हैं, और पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलियम के अंदर कुनीडिया प्रोड्यूस होती हैं, जबकि म्यूकर के अंदर जो है ना वो स्पोर्स प्रोड्यूस होती हैं। कुनीडिया और स्पोर्स में थोड़ा थोड़ा
फर्क मौजूद है। जब इसके हम माइसीलियम को देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, इसमें सेप्टम नजर आता है, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, पीटीए पोर होते हैं और न्यूक्लियस वगैरह इसके सेल के अंदर पाया जाता है। This Penicillium is a saprophytic fungus and usually grows upon the rotten vegetables, fruits, meat, and may other moist organic matter. Mycelium is cotton net-like. It is branched and septate, have feet tips, penetrate substratum, absorb food material. The cell walls are thin and cells are the binucleate, the multinucleate. उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। Asexual reproduction takes place by means of the uninucleate conidia. The conidia are developed on the conidiophore. The conidiophores are the branch septate, the मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट मतलब एक सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। The branches are called the medullae. On the terminal end of the branch of the conidiophores, the bottle-like stigmata phyllates. This is the conidiophore, this is stigmata, this is the conidia. You can see over here, these stigmata are the uninucleate. इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है जब conidiophore के अंदर ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। Structure and development of the conidia. ये आप खुद देख लीजिएगा conidia की स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसमें उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है। उसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होमोथैलिक होती है, जबकि म्यूकर के अंदर हीटेरोथैलिक थी, ये उसमें प्लस और माइनस दोनों पाए जाते हैं, जब इसके अंदर एक तरह के ही थलाई होती हैं। The sexual reproduction is oogamous. The male sex organs are antheridia and female sex organs are known as the ascogonia. इसमें दो तरह की सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो ओगोनिया होता है, मेल सेक्स ऑर्गन को हम थ्रेडिया कहा जाता है और एस्कोगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है। अब एस्कोगोनियम क्या चीज है? A mature ascogonium is a long, erect, multinuclear tubular structure with curved upper end. It arises from the uninucleate septate heavy as finger-like lateral outgrowth which elongates into an ascogonium. The nucleus of the ascogonium divides many times mitotically to produce 32-64 nuclei. In this diagram, you can see that the sexual reproduction fusion of the Antheridium and the Ascogonium. This is the 1A to FA, and this is the B, C, D, E, and F. This is the sexual reproduction. This is the hyphae. This is the young ascogonium. The young ascogonium, when further mature, to produces the mononuclei. Mononuclei, it has the uninucleate male initials as well as a multinucleate. The ascogonium also produced over here, and then antheridia are produced. The antheridia having the this antheridia as the male sex organ, whereas the asogonia is the female sex organ. When it engulf the female sex organs, it penetrates the nucleus to the female structures, then both fused each other. Further, they produces the mature ascogonium. Then mature ascogonium further produces the ascogonia, and ascogonia further develop into the mycelium. Antheridial branch develop from the same hyphae adjacent to the developing ascogonium or from the neighboring hyphae. It grows up, coils around the ascogonium, the tip swells up and is cut off from the rest of the branch to form the uninucleus antheridium. Then fertilization occurred. After the fertilization, the protoplasm metangia comes contact with each other through the spore. The antheridial and ascogolial nuclei arrange themselves in pairs. Each pair is called the dikaryon. Dikaryon means that the structures having two types of the nucleus. Development of the ascus and ascospores. This is not much important, but you can go through this structure as well. This is the sexual reproduction. This is the sexual reproduction in the Penicillium life cycle. You can easily understand that the conidia, when germinate to produce the penicillium, which is the mycelium, then mycelium produces the conidiophore, then conidiophore produces the conidia. In this way, sexual reproduction takes place. In this sexual reproduction, the ascogonia and antheridia are produced.
when both are the haploid. When the haploid nuclei during process of the dikaryon phase, plasmogamy occurred, produces the N plus N, produces the escogenous hyphae. When escogenous hyphae produces the clastocytium. The clastocytium produces the ascus, and ascus during the meiosis produces the ascospores. However, the ascospores further germinate to produce the mycelium, which is the haploid. Basically, this is just like that of the angiosperms types of the life cycle.